Welcome to Professor's Chemistry session. This is the second video on answers and pattern of evaluation on chemistry question paper for AHSE 2024. This is the second video of my career point. Now, let us come for the answer sheet of set D of chemistry question paper in AHSE 2024. This is the answers of group B. ग्रुप बी रे नॉर्मली दुईटी क्वेश्चन थाए क्वेश्चन नंबर 3 एवं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 रे 10टी क्वेश्चन थाए आमको से 7टी प्रश्न उत्तर लिखा पड़े 2 मार्क लेखा से 14 मार्क्स एवं 4 नंबर क्वेश्चन रे 10टी क्वेश्चन पड़े आमको 7टी आंसर लिखा पड़े ईच क्वेश्चन 3 मार्क करी 7टी रे 21 मार्क हमको मिलता है. लेट अस कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 3A. Write the two important functions of protein. We have to write down the functions of protein. Come for the answers. Uses of protein or functions of protein. It is used to build and repair muscles and bones, to make hormones and enzymes. पिला माने जेहेतु two important functions or uses ऊपर question अच्छी, so you must have to write down at least two important functions or uses. For each uses or functions you will get 1 mark. ये बोली दुईटी functions लिखिले आमको 2 मार्क मिलिबो. Let us come for the question number 3B. Give an example chemical test to distinguish between acetaldehyde and acetone. acetaldehyde और acetone को distinguish करिया ପାଇଁ गोटे chemical test दबा को कहिछि. Come for the answer. Whenever acetaldehyde reacts with tolerance reagent, it will give us ammonium acetate, ammonia, water and silver mirror precipitate is formed. But whenever tolerance reagent is added to acetone, it doesn't undergo any reactions. Means by using the tolerance reagent, we can distinguish between acetaldehyde and acetone. Acetaldehyde can give us silver mirror while acetone cannot. Thus, acetaldehyde reacts with tolerance reagent to give silver mirror while acetone does not react with it. आमको गोटे आंसर लिखा पड़ो जहाँद्वारा आम डिस्टिंग्विश करिपरिबा आमे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन भितर आम टॉलरेंस रिजन को नहीं लिखीचु. यू कैन राइट ऑल्सो बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन. यदि फेलिंग सॉल्यूशन नब ताले एसिटाल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन सहित रिएक्शन कले रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दब किंतु एसीटोन रिएक्शन करिबो नाही. सो एनी वन आंसर यू कैन गिव. गोटे केमिकल टेस्ट को लिखिले आल्डिहाइड रो इक्वेशन एवं कीटोन रो इक्वेशन विथ स्टेटमेंट ये रहिबो 2 मार्क्स. आल्डिहाइड रो केमिकल इक्वेशन ले 1 मार्क थिबो एवं कीटोन एसीटोन रिएक्शन करे नाही बोली देखि डिस्क्रिप्शन टे लिखिले तापर हमको 1 मार्क मिलिबो. कम फॉर क्वेश्चन नंबर 3C. एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. काहे कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करंती. The ability of transition element to form complex compounds is due to the following reasons. Small size of cations, that is central transition metal ion, high nuclear charge, availability of weak and d orbitals of approximately same energy, and tendency of the central metal ion to acquire the effective atomic number of the next inert gas to obey the EAN rule. These are the different reasons by which the transition elements have ability to form complexes. तेणु पिला माने जेतु 2 मार्क रो क्वेश्चन अछि एई 4टी पॉइंट लिखिथिले प्रति पॉइंट को हाफ मार्क करी तुमको 2 मार्क मिलिबो. यदि मिक्स करी लिखिथियो मध्ये तापर मार्किंग रहिबो. कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3D. हाउ डज टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट विथ फॉर्मिक एसिड. टॉलरेंस रिएजेंट फॉर्मिक एसिड सहित रिएक्शन करे कि पड़ी. जेहेतु क्वेश्चन 2 मार्क अच्छी इक्वेशन 1 मार्क एवं स्टेटमेंट 1 मार्क रहिबो. इक्वेशन वी हैव टू राइट डाउन HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस टॉलरेंस रिएजेंट गिव्स अस अमोनियम फॉर्मेट, अमोनिया, वाटर एंड सिल्वर मिरर. ये इक्वेशन हमको 1 मार्क मिलिबो एवं स्टेटमेंट ये लिखिथिले फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ टॉलरेंस रिएजेंट टू गिव सिल्वर मिरर. पिला माने मने रखिबो प्रथम स्टेटमेंट तापर इक्वेशन लिखिले मध्य एथिरे कोनोसी असुविधा रहिबो नाही. आमको स्टेटमेंट ऊपर लिखा तले लिखी आमको 1 मार्क मिल एवं इक्वेशन 1 मार्क रही. कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3E.
राइट कार्बाइलामिन रिएक्शन एटी मध्य 2 मार्क अच्छी इक्वेशन रे 1 मार्क एवं स्टेटमेंट रे 1 मार्क किंतु मन रखिबो स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम ऑफ द रिएक्शन कंटेन्स 0.5 मार्क जदि सही लाइन टी को लिखा जाय नथिबो हमको 0.5 मार्क लॉस करिया को पड़िबो व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म in alcohol in KOH alcoholic KOH then corresponding alkyl isocyanide RNC plus KCl potassium chloride and water is born so प्रथम इक्वेशन लिखा को पड़िबो तुम्हें चाहिए आर जगह C3 नगी मध्य मिथाइलामिन नगी नहीं मिथाइल आइसोसियानाइड फॉर्मेशन देखि पारिबो मुठी जनरल इक्वेशन टे लिखिछि तुम्हें एग्जांपल लिखिथिले सेत्री किछि प्रॉब्लम रहइबो नाही ता पई तुम हताश बा उचित नुहे सो जनरल इक्वेशन हो बा एग्जांपल वाला इक्वेशन टी हो तुमको तापुर 1 मार्क मिलिबो स्टेटमेंट टे लिखिया को पड़िबो व्हेन प्राइमरी अमीन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन देन corresponding alkyl isocyanide is formed एथिरे 0.5 मार्क थिबो this reaction is called कार्बाइलामिन reaction एथिरे 0.5 मार्क रहइबो because this is the name reaction come for the next question 3F what is galvanic cell give one example आम galvanic cell कहले कौन बुझा galvanic cell or electrochemical cell is a device in which the redox reaction takes place indirectly and the decrease of free energy appears in the form of electrical energy after that तुम्हें गोटे वेल लेवल डायग्राम टे बनै देबो वेल लेवल डायग्राम टे बनै दे तार सेल नोटेशन टे लिखिबो कि हमें जिंक रो डिप करिछु ZnSO4 सॉल्यूशन ले एवं कॉपर रो डिप हेछि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले ताको गोटे एक्सटर्नल सर्किट द्वारा कलेक्शन कराई बाय यूजिंग ए गाल्वानोमीटर सो जेहेतु 2 मार्क प्रश्न एथि अधिक कथा लिखा को पड़िबो नाही डेफिनेशन पाई 1 मार्क थिबो आउ गोटे एग्जांपल दबो नोटेशन सह ता पाई 1 मार्क टिए थिबो एठी आउ फंक्शंस विषय लिखिबार कोनोसी आवश्यकता नाही कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3G डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन T हाफ एंड K फॉर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको टी हाफ आउ रेड कन्स्टांट भितर रिलेशन काढ़ा पड़ो प्रथम हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन लिखा पड़ो तेणु पिला माने डेफिनेशन 1 मार्क एवं रिलेशन 1 मार्क प्रथम हमको डेफिनेशन टी लिखा पड़ो व्हाट डू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड इट इज द टाइम इट इज डिफाइंड एज द टाइम taken to reduce the initial concentration of the reactant to half of its initial value. It is denoted by the symbol T half or T0.5. If the initial concentration of A is A0 when T is equal to 0, then at T half T is equal to T half A must be equal to A0 by 2. कारण डेफिनेशन कहला जे T जदि T half हुए ताले A टा A0 by 2 अर्थात इनिशियल कंसंट्रेशन अधा हो जिवो पुटिंग दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन भी नहीं हमको रेट इक्वेशन आम पुट करवा जदि K इज इक्वल टू 2.303 by T log A0 by A से जगह में पुट करदेबू T इज इक्वल टू T half A इज इक्वल टू A0 by 2 then it will be converted to that is K1 is equal to 0.693 sorry T half is equal to 0.693 by K1. This is the relationship between half life period and the rate constant of the first order reaction. तुमको डेफिनेशन ऊपर 1 मार्क थिबो आउ रिलेशन टी को डेराइव करी देखैबो ता ऊपर 1 मार्क थिबो. Let us come for the next question 3H. Distinguish between molarity and normality. Molarity और normality भीतर हमें डिफरेंस लिखिबा. हमें molarity क्या को कहबा the number of moles of solute present per liter of solution is known as molarity. But in case of normality the number of gram equivalent of solute present per liter of solution is known as normality N. The unit of molarity is mole per liter or mole per decimeter cube, whereas the unit of normality is gram equivalent per liter. हमको दुईटी डिफरेंस लिखिले 2 मार्क मिलिबो आ अधिक लिखिबार कोनोसी आवश्यकता नाही. कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 3I. An organic compound A gives hydrogen on reaction with sodium metal. It also gives iodoform test and form an aldehyde B of the molecular formula C2H4O on oxidation. Name the compound A and B. निश्चित भाव में ए गोटे अल्कोहल जी ऑक्सीडेशन पर आल्डिहाइड टी दबो एवं जे अल्कोहल जतबे सोडियम वाटर सहित रिएक्शन करिवो सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दबो सो जो आल्डिहाइड टी हमको फॉर्मेशन ऑफ से देछि C2H4O मींस CH3CHO
So compound B is acetaldehyde while the compound A is ethyl alcohol. Thus you have to identify. A को identify कले 1 mark मिलिबो এবং B को identify कले 1 mark मिलिबो. But student you must have to write down. You must have to write the name of the compound. Otherwise mark may be deducted. Come to the last question of this. Question number 3. J. The complex CONH3 whole 2 CO3Cl has two ionization isomers. Write the structure and their IPAC name. आमको दी जक स्ट्रक्चर लिखा पड़ो जिते क्लोराइड बाहर रे आमको पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड से आमको क्लोराइड आयन दब जिते कार्बोनेट बाहर को आसो क्लोराइड टी कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर रतबले से आमको कार्बोनेट आयन दे पार यही हिसाब से आयन दुईटा आयनाइजेशन आइसोमर जिम देखई पारे आउ सेकेंड कंपाउंड नाम हम पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 कार्बोनेट सो पिला माने मन रखिब दुईटा जाक स्ट्रक्चर लिखिब हाफ मार्क तार नाम लिखिब आउ हाफ मार्क तेणु स्ट्रक्चर पाई हाफ हाफ 1 मार्क नेम पाई हाफ हाफ 1 मार्क यही 3 जे रे तुमे 2 मार्क्स आंसर 2 मार्क पाई परिबो कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इट इज स्लाइटली मोर डिस्क्रिप्टिव देन क्वेश्चन नंबर 3 प्रत्येक प्रश्नर उत्तर लिखा आमको 3 मार्क मिले व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर सो दैट इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आमको ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन लिखा पड़ो ए 1 मार्क थी आउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रमाण कले 2 मार्क थी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस that is to stop the passage of solvent molecules through the semi-permeable membrane into the solution is called osmotic pressure of the solution. एभली हिसाब में डेफिनेशन लिखिलु एबे प्रूफ करिबु osmotic pressure is a colligative property. According to Boyle-Hope law, osmotic pressure pi is inversely proportional to volume. According to Charles-Van't law, osmotic pressure pi is directly proportional to T. Combining these two equations, we can write down pi is proportional to T by V, implies pi by V is equal to Kt, where K is the constant called Van't constant for solution and has the same value for all solution. The value of K has been found to be same as that of R, that is gas constant. So we can write down pi V is equal to RT. Instead of Kt, we can write down RT. For 1 mole of solute dissolved in volume 1 liter, we can write down pi V is equal to nRT. For n mole, we can write down pi is equal to n by V RT, implies pi is equal to CRT. Here C is the molar concentration of the solution. For a solution at a given temperature, both R and T are constants. Hence, we can write down pi is directly proportional to concentration C. Since the osmotic pressure depends upon the molar concentration of the solution, it is a colligative property. आमको ये प्रूफ कले तापर 2 मार्क मिलिबो एबे जिबा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन बी को हाउ डज एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ एसोसिएल टू थायोनिल क्लोराइड एंड PCl5 आमको 3 मार्क अछि प्रत्येक इक्वेशन ले 1 मार्क थिबो एवं तांको पय स्टेटमेंट रे 0.5 मार्क थिबो प्रथम इक्वेशन टी देखो हम लिखिछु थायोनिल क्लोराइड पय एसिटिक एसिड थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करिछि एसिटाइल क्लोराइड SO2 और HCl गैस देइछि ए इक्वेशन पाई हमको 1 मार्क मिलिबो एवं ता डिस्क्रिप्शन लिखिया पड़ियो व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड टू देन एसिटाइल क्लोराइड इज फॉर्म इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म then we have to write down the second bit, that is reaction with PCl5 whenever the acetic acid reacts with PCl5 phosphorus pentachloride it will give acetyl chloride POCl3 and HCl एटी HCl टी केवल गैस किंतु आमको एसिटाइल क्लोराइड सहित POCl3 मिक्सचर हिसाब से मिलिबो तेणु एटा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलिबो नाही बट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ फॉस्फोरस pentachloride then acetyl chloride is formed. Now let us come for question number C. For C, derive the Nernst equation for electrode at 25 degrees Celsius. For the electrode reaction, Mn plus aqueous plus n electron gives m solid. The given electrode reaction is Mn plus aqueous plus n electron gives m solid. The electrode potential at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode can be represented by Nernst equation as follows. EMF E Mn plus by m is equal to E0 Mn plus m
minus RT by NF ln m by mn plus. Now, by taking the natural logarithm, we can write this equation, but the concentration of solid M is taken as unity, so we can write down E mn plus m is equal to E0 mn plus m minus RT by NF log 1 by mn plus, because m solid is 1. Now, here E m plus by m plus m is the electrode potential of the electrode, E0 m plus m is the standard electrode potential of the electrode, R is the gas constant which is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole, F is equal to Faraday constant 96,487 coulombs per mole, T is equal to temperature in Kelvin, and Mn plus is the concentration of the species Mn plus. Now, in the form of natural logarithm, the above equation can be written as E mn plus m is equal to E0 minus RT by NF log 1 by mn plus. Now, 2.3, here we have to write down 2.303 also. Now, by taking the standard values of R, T and F, the above equation can be written as E is equal to E0 minus 0.0591 by n log 1 by mn plus. This is the required nonce equation for the given electrode potential. Now come for the question number 4D. What do you mean by geometrical isomerism? Give examples of geometrical isomers with coordination number 4 and 6. One in each case. आमको geometrical isomerism definition लिखिले 1 मार्क मिलिबो एवं coordination number 4 थिबा example पाई 1 मार्क एवं coordination number 6 रे 1 मार्क. First come for geometrical isomerism. When same molecular formula represent two or more complexes due to different possible geometrical arrangements of the ligands, then such isomers are known as geometrical isomers, and the phenomenon is known as geometrical isomerism. यहाँ पे हमको 1 मार्क मिलिबो एवं coordination number 4 रो examples टे दबा को पड़िबो ता पे हमको 1 मार्क मिलिबो. With coordination number 4 we can give the example as cis isomer and trans isomer of PT ammonia whole to Cl2 diamine dichloride of platinum. एग्जांपल पाई हमको 1 मार्क मिलिबो एवं एग्जांपल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रे एग्जांपल टे लिखिला परे हम एठी नेइचो टेट्राअमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट आयन. Now come for the next question, that is question number 4E. Explain the amphoteric behavior of amino acids. Amino acids amphoteric behavior हमको explain करिया को पड़िबो. Amino acid general structure टी कोन RCOOH NH2H. इतरे कौन है आम पाखे NH2 ग्रुप अच्छे और COH ग्रुप अच्छे. आम्फोटेरिक मीन्स ये बोथ बिहेविंग देखो एसिडिक और बेसिक बिहेविंग. कौन लिखा अमीनो एसिड्स हैव अमीनो NH2 ग्रुप व्हिच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन एंड कॉजेस देयर बेसिक कैरेक्टर. अगेन अमीनो एसिड्स दीज हैव COH ग्रुप व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड कॉजेस देयर इट शुड बी रिटन व्हिच कैन डोनेट ए प्रोटॉन. ये बाय मिस्टेकली एक्सेप्ट लिखाई पे करेक्शन कर रखिबो. Which can donate a proton and causes acidic nature. Thus, these form a dipolar ion called zeta ion as follows. See, dipolar ion te formation karibo COH पाखरु H पळै जिवो NH2 पाखकु CN3 प्लस हे जिवो COOH टा CO माइनस हे जिवो. समान इक्विलिब्रियम हे रहिथांती. In this form, amino acids behave both as acids and bases, so they are amphoteric in nature. यही हिसाब से आमको एक्सप्लेन करने को पड़ो जे अमीनो एसिड पाखे NH2 और COH ग्रुप थी ये बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेविंग देखाए तेणु से आम्फोटेरिक इन नेचर है. कपर क्वेश्चन नंबर 4 गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7. व्हाट हैपेंस व्हेन इट स्ट्रांगली हीटेड. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 पिला माने 2 मार्क थिबो एवं स्ट्रांगली हीट कले से केमती डिकम्पोज हुए ताको इक्वेशन सो लिखिबेला ता ऊपर हमको 1 मार्क मिलिबो. आमको स्टेप वाइज पोटासियम डाइक्रोमेट प्रिपरेशन देखा पड़ो. आमको प्रथम क्रोमाइट ओर को फ्यूज करिया को पड़ो सोडियम कार्बोनेट सहित आउ फ्री एक्सेस ऑफ एयर रे आमे ताको ट्रीट करूँ. आमको सोडियम क्रोमेट फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो. तापरे पुणी जते बेले सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड सहित ट्रीट करूँ से आमको सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम सल्फेट और वाटर दब. जब सोडियम सल्फेट डाइक्रोमेट को पुणी थे आम पोटासियम क्लोराइड सहित ट्रीट करूँ से पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और NaCl दब.
पे ये तीनोटी जाक स्टेप को तुमको सठिक भाव में लिखा पड़ो तापर तुम्हें 2 मार्क पाइब एवं हाउ डज व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड जब तुम ताको हिट करूँ कौन हुए हमारे K2CO7 potassium dichromate is heated strongly it decomposes to give chromic oxide and oxygen Cr2O3 and O2 potassium chromate दब chromic oxide दब एवं oxygen दब या ऊपर हमको 1 मार्क मिल जाए एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज 4G discuss the mechanism of SN1 reaction of alkyl halides हमको mechanism शो करने को पड़िबो SN1 reaction means unimolecular nucleophilic substitution reaction it will better to write down the definition first when the rate of nucleophilic substitution reaction depends upon the concentration of the substrate and is independent on the concentration of the nucleophile the reaction is of first order and is represented as SN1 reaction. This is a two-step reaction and is proceed through the formation of a reaction intermediate and the rate is proportional to the concentration of substrate only. Come for the examples and mechanism. प्रथम example दिए नेले tertiary butyl bromide whenever reacts with aqueous NaOH gives us tertiary butyl alcohol and sodium bromide. Mechanism in the step 1 the alkyl halide ionizes to give carbonium ion. This is the slower step and is the rate determining step. प्रथमे tertiary butyl bromide heterolytic bond fission हम bromide ion बाहरी जीवो एवं ये गोटे tertiary carbocation formation करिवो which is planar in nature. Now the nucleophile can attack the planar structure of tertiary carbocation to give a racemic mixture, retention of configuration and inversion of configuration. If the second step is the first step, so the rate depends upon only the slower step, that is the first step. So rate is proportional to the concentration of tertiary butyl bromide. Due to the high stability of tertiary carbocation, the order of reactivity for SN1 reaction is tertiary alkyl halide is more than secondary alkyl halide is more than primary alkyl halide. Come for the question number 4 is in a first order reaction the reactant concentration decreases from 0.8 m to 0.4 m in 15 minutes. What is the time taken for the concentration to change from 0.1 m to 0.025 m? In the case 1 what happens? For the first order reaction A0 हम पाखे 0.8 m थिला A 0.4 m थिला means 0.8 is directly converted to 0.4 means half. जेहेतु टाइम 15 मिनिट्स आउ सी तार हाफ को कन्वर्ट होमें कौन करूँ ये सब सर्टकट वे A by A0 कैलकुलेशन करदेव आंसर बाहर हाफ मीन्स हाफ टू दी पावर 1 जेहेतु हाफ टू दी पावर 1 आम n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 हम सो टाइम इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 15 मिनिट्स मीन्स केस 1 आम टी हाफ पाई गलु 15 मिनिट बोली एबे केस 2 पाई जीवु फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A0 इज इक्वल टू 0.1 m whereas A is equal to 0.025 m. What is the time t? Here A by A0 means A is 0.025 by 0.1 that is equal to 1 by 4 which is equal to 1 by 2 to the power 2 means n is equal to 2. Here number of half lives n is equal to 2 and time is equal to n t half. Number of half lives into t half, no, half life is equal to t 2 into 15 minutes that is equal to 30 minutes and the time taken for the concentration to change from 0.1 m to 0.025 m is 30 minutes. ए वे रे पिला माने तुम करि पारो अदरवाइज तुम बुक रे जो फार्मूला थिला k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a0 by a से फार्मूला यूज करी मध्ये अल्टरनेटिव वे रे तुम कैलकुलेशन करि पारिबो एथिरु तुम प्रथमे k1 को कैलकुलेशन करनबो इट विल बी 0.046 आफ्टर दैट बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ k1 we can calculate the time t that is t is equal to 2.303 by k1 log a0 by a put in the value we can get the answer 30 minutes जे कोन से उपाय रे तुम माने करि परिबो आ या ऊपर तुम 3 रु 3 मार पाई परिबो कोन से मेथड कंपलसरी नहीं कंपेयर क्वेश्चन नंबर 4i how do primary secondary and tertiary aliphatic amines differ in their behavior toward the nitrous acid प्रथम जते बेले प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड सहित रिएक्शन करे से हमको कोन दिए ना प्राइमरी अल्कोहल nitrogen and water but in case of secondary amine what will it give us it will give us dialkyl nitrosoamine and water सेठी प्राइमरी अल्कोहल दउतला एटी dialkyl nitrosoamine टी दबो जदि हमें tertiary amine टी नबा ताले कोन दबो ना सी हमको प्रथमे दबो नाइट्रेट सॉल्ट तापर दबो
डाइअल्काइल नाइट्रोसोआमिन्स एंड अल्कोहल तेणु पिला मन रखा पड़ो तीनोटी जाक आमिन तीनोटी रिएक्शन लिखिले एक एक मार्क करी तुमको 3 मार्क मिल नाउ कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द टू इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स टू इंपोर्टेंट फंक्शन हमको लिखा पड़ो टू इंपोर्टेंट biological functions of nucleic acids are replication and protein synthesis. These are the two important functions of proteins. What is replication? It is a process by which a single DNA molecule produces two identical copies of itself. It is an enzyme catalyzed process. The two identical copies of DNA produced from the original DNA are then passed onto the two new cells resulting from the cell divisions. In this way, hereditary characters are transmitted from one cell to another. This is by the process of replication. Now the second one is the synthesis of protein. The RNA, ribonucleic acids molecule present in the cell nucleus is responsible for the synthesis of all proteins present in a cell. Protein synthesis is a very fast process. Thanks for watching my YouTube channel. Wait for the video with answers of group C. Like and share this video. Don't forget to subscribe my channel if you are watching it for the first time. Try to share this video. As a result, it can reach at all the examinees and it can be helpful to assess their achievement. Thanks for watching.